We are starting the show with the turnaround story from Delhi. Delhi, till a few weeks ago, was the COVID capital of India, the city with the maximum COVID positive patients. But now it is steadily climbing down. What changed? Rupashi Nanda with a ground report from central Delhi, the district which was the worst hit in the capital. Delhi's central district, home to the walled city, one of the most densely populated areas in the country. It was the worst hit by the pandemic, topping Delhi's 11 districts in infections and deaths. 3 months later, there's been a remarkable turnaround with a mix of strategies based on area. Chandi Mahal is different from Nabi Karim, and Chandi Mahal is very different from Bapa Nagar. So Chandi Mahal was the area which was dense, which is highly populated, but the people staying there may not be migrant category. Bapa Nagar was an area which the owners were less, the migrant population who was staying there as tenants were more. Nabi Karim was the area which had mix of both and also the market areas. So these three areas, though very in close proximity, are very different from each other. So we reached to the conclusion that adopting different strategy for different areas would be beneficial. This team is making its way through cramped spaces to check on patients in home isolation. With little space between homes, it is a tough job. मेडिसिन मिली है, सब कुछ मिला है, फोन करके हमसे पूछ भी रहे हैं कि तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है, हम उसका हाल जल्द बता रहे हैं। कैसे हो अभी? बढ़िया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। This patient has been in home isolation for a month. नहीं ठीक है क्योंकि मेरे को सिम्टम्स भी नहीं थे, तबीयत खराब नहीं हुई, ऑक्सीमीटर था मेरे पास, तो रीडिंग लेता रहा मैं। रीडिंग लेने वो सुबह आते भी थे मेरे पास फीवर की और ऑक्सीमीटर से। हम दिल्ली पुलिस पर्सन लेते हैं, सिविल डिफेंस का एक आदमी और मैं खुद होता हूं, तो टैपिंग करते हैं। उन्हें जो हेल्पलाइन नंबर है डिपार्टमेंट ने दिया है, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने रिलीज किया है, वो हेल्पलाइन नंबर दे के जाते हैं। उनके घर की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए सिविल डिफेंस के एक आदमी का नंबर देते हैं। Chandi Mahal had 17 hotspots. The entire 4 square kilometer area with 1 lakh people was declared a containment zone on 6 June. Just 2 zones housing 200 people remain red zones now. Maintaining social distancing and enforcing perimeter control wasn't easy. जितनी इस इलाके में सख्ती है, किसी इलाके में सख्ती नहीं है इतनी। जैसे मुसीबत पड़ती है उसका मुकाबला करना पड़ता है, उससे हार के जमीन पे तो लेट नहीं जाएंगे। 70 of the 190 people who tested positive in Bapa Nagar were moved to COVID care centers since home isolation was just not feasible. Just 8 active cases remain. All 4 of Vidya's children tested positive. मेरे को डर ऐसा लगा कि ये क्या हो गया, ऐसे डर गई कि ठीक ठाक थे बच्चे, ये क्या हुआ। मैंने तो खुद ही जांच करवाने के लिए भेजी थी, क्या हो गया, ये ऐसे डर गई, टेंशन में दिमाग हो गया। अब बाकी ठीक है, उनकी निगेटिव फिर आ गई रिपोर्ट। The area is a hub of small manufacturing units and shops married to residential complexes. The COVID threat notwithstanding, businesses have resumed. दिमाग में बसा हुआ रहता है कुछ काम करें, तो दुकान खोल रहा हूँ, वैसे कोई डर समझ में नहीं आता, न कुछ ऐसे लगता है। Bapa Nagar is also home to a large migrant population. Surveys are on by ASHA workers to check on occupancy of rooms. अच्छा, तो आपने पूछा कमरा खाली है या नहीं, ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि कमरा खाली है तो कोई किराएदार है तो नहीं रहे, कब से चले गए हैं, तो उसका भी डिटेल देनी है ना, कितने रूम खाली रहते हैं। One of the first containment areas in Delhi was here in Nabi Karim. Most of those infected were young and fatalities were low.
the houses are very close by. So first we had the initial resistance from people that why were they targeted first of all. Because it was the first containment zone in Delhi, 10th April it was made containment zone. So to make people aware and to spread the message, we had the help of these ASHA workers. But they have performed very well, and because of that now I think containment zone Nabi Karim is almost nil. There are no positive cases in the last 10-15 days. प्रशासन ने बहुत अच्छी तरीके से निभाया है यहाँ पर, लोगों को नियंत्रण में रखा है, बाकी यहाँ कोई केस नहीं निकला है और पुलिस प्रशासन जो देखभाल यहाँ की कर रहा था उन्होंने पूरी बराबर की है। This school has been taken over by the district administration and functions as a testing center, surveillance unit and a telemedicine hub. Aarti, a civil defense volunteer, and Sumit, a government school teacher, are making calls to those in home isolation to check on their health. इनकमिंग तो अभी नहीं आ रही है, बहुत कम आ रही है अभी। मैम 5-6 होती हैं सिर्फ अभी पर वॉलंटियर्स। हाँ जी मैम, आउटगोइंग करनी पड़ती है हमें पेशेंट्स को रिकवरी के लिए कि आप रिकवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सिर्फ यही कॉल्स हैं। पेशेंट पॉजिटिव है, उनको उनसे हम उनकी तबीयत के बारे में पता करते हैं कि अभी कैसा फील कर रहे हैं वो, क्या वो होम आइसोलेशन में जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से रह रहे हैं। Dr. Roshan Jodhkar gives medical advice to those who call in. जो हमारे पास कॉल्स आती हैं वो ज़्यादातर माइल्ड जो केसेस हैं उनकी आती हैं, या फिर जो भी पेशेंट सपोज कोई पॉजिटिव आ गया तो उसके कोई भी जैसे घर वाले हैं तो वो थोड़े ऐसे होता है कि हमने टेस्ट करवाना, कहाँ करवाएं, तो उस रिगार्डिंग भी हम बता देते हैं। A mobile testing van with doctors, lab technicians and health workers is parked in the slum cluster of Bapa Nagar, asking people to turn up for testing. The response is good. Those who test positive are sent either to home isolation or a COVID care center. तो देखो है सबसे बड़ा रिस्क तो हम ही उठा रहे हैं, ठीक है। हमारे साथ हमारा मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर हैं, ये एनएम है, सब बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और बहुत ही परेशानी भी हो रही है हमारे को। वे इसमें बहुत पसीने आ रहे हैं, हमारे पास बहुत स्वेट हो रहा है, अभी डिहाइड्रेशन भी हो जाता है, फिर क्या करें मैडम, मजबूरी है। हमारा तो आगे लड़की करवाना है। लड़की का करवाना है? अच्छा, आप नेगेटिव निकले? हमारा हो गया सही है। सही है। अच्छा, और ये पिताजी का? उनके भी सही है। I'm standing in this narrow gully in Nabi Karim just to give you an idea about how difficult it is to enforce social distancing, that critical mantra when it comes to fighting COVID-19. Now, if I stretch my hand on the right hand side, I can touch a wall. And if I can stretch my hand on the left hand side also, I am touching another wall. On both sides you can see shops and you can see households. Some of the shops are even open. Now this is just to give you an idea about how difficult it was for the Central District Administration in order to enforce social distancing over here and win the confidence of people. Not just that, it also had to think on its feet and reinvent strategies to engineer the turnaround that the district has seen today. With camera person Guneet, in Nabi Karim, Rupashri Nanda.